every eye is directed towards them. We bless the Maharaja for it. Is all this effort then of no use? Okay, so what is the reader is asking now? He's pointing out that in his the whole discussion that was in the book, there is no discussion about education. Hmm? And we all know that education is very important. And we have always also complained about the absence of education among us. And there are people like Maharaja Gaikwad who have introduced compulsory education for all children in their territories. So the reader wants to know Gandhiji's view about the situation of education in India. Editor. If we consider our civilization to be the highest, I have regretfully to say that much of the effort you have described is of no use. The motive of the Maharaja and other great leaders who have been working in this direction is perfectly pure. They therefore undoubtedly deserve great praise. But we cannot conceal from ourselves the result that is likely to flow from their effort. What is the meaning of education? It simply means a knowledge of letters. It is merely an instrument, and an instrument may be well used or abused. The same instrument that may be used to cure a patient may be used to take his life, and so may a knowledge of letters. We daily observe that many men abuse it and very few make good use of it. And if this is a correct statement, we have proved that more harm has been done by it than good. Okay. So what is Gandhiji saying now? He is saying that the efforts that have been made to promote education in India are of no use. है ना? गांधी जी एक बहुत ही कंटेंशियस से स्टेटमेंट के साथ ये स्टार्ट करते हैं कि जो भी जैसे कि महाराजा गायकवाड़ हैं या और भी लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी टेरिटरीज में यूनिवर्सल एजुकेशन का जो है वो किया है, कोशिशें की हैं, वो क्या है? दे आर ऑफ नो यूज. एंड व्हाई इज इट सो? Because he thinks that nothing would come out of the kind of education that they are providing to the students. उनको क्या लगता है कि जिस टाइप की एजुकेशन उनको दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है, वो किसी भी यूज की नहीं है. So he is asking us, what is the meaning of education? Education क्या है? अगर हम उसको बहुत सिंपली डिफाइन करें तो वो क्या है? It means a knowledge of letters. Knowledge of letters meaning you can read and write. आप नंबर्स पढ़ सकते हो, आप अल्फाबेट्स पढ़ सकते हो, और उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन. It is merely an instrument, and an instrument may be well used or abused. He is comparing education with a kind of an instrument, a tool. आप किसी टूल से जो है उसको, गांधी जी ने क्या किया है? एजुकेशन को कंपेयर किया है एक टूल जो है वो. इट डिपेंड्स ऑन हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर यूजिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नाइफ. अगर कोई नाइफ है तो आप उससे जो है कुछ तराश के कुछ सुंदर सा भी बना सकते हो, है ना? वो जो है टूल किस चीज का टूल हो जाएगा? फॉर ब्यूटिफिकेशन, फॉर क्रिएशन ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल. बट उसी नाइफ से आप क्या कर सकते हो? किसी को चोट भी पहुंचा सकते हो, है ना? तो ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है नॉलेज है, जो कि अगर आप उसको अच्छा यूज करो तो उससे लोगों का फायदा होगा, अगर आप उसे अच्छे से यूज ना करो तो उससे क्या होगा? लोगों का बुरा होगा. सो इट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द पर्सन
who is using it. और अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज होती है हम उसका अब्यूज ज़्यादा करते हैं और उसको अच्छे यूज़ के लिए कम लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने पहले गांधी जी का रेफरेंस पढ़ा था कि ही डज नॉट लाइक द प्रोफेशन ऑफ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स. जो अब पढ़ लिख के जो डॉक्टर बन रहे हैं, somehow they have the knowledge but they do not have the values, है ना. तो क्या हो गया है कि जो डॉक्टर हैज बिकम अ प्रोफेशन, जो कि लोगों की सेवा करते थे, which was supposed to be a service, it has become a means of extracting money from people. The ordinary meaning of education is a knowledge of letters. To teach boys reading, writing, and arithmetic is called primary education. A peasant earns his bread honestly. He has ordinary knowledge of the world. He knows fairly well how he should behave towards his parents, his wife, his children, and his fellow villagers. He understands and observes the rules of morality, but he cannot write his own name. What do you propose to do by giving him a knowledge of letters? Will you add an inch to his happiness? Do you wish to make him discontented with his cottage or his lot? Or even if you want to do that, he will not need such an education. Okay, so what is he saying? What is primary education? जो primary education होती है उसमें आप क्या पढ़ते हो? You learn to identify the alphabets, you learn to identify the numbers, and you do arithmetic, plus minus, basic maths. So this is primary education. Now he questions, there is a peasant, a person working on a farm. He is able to earn money for himself and his family, and he is doing it in a very honest way. He goes to the farm, he works hard on it, he gets money in return, and he spends that money on the well-being of his family. Now, if you are going to teach him reading, writing, and arithmetic, okay, and also he is a good parent. He is good towards his parents, he is good towards his wife and his children and his fellow villagers, meaning that he behaves in a very good manner with everybody around him. Okay? He is a very moral person, but he cannot write his own name. He is not educated. Now, if you are going to educate him, ठीक है, अगर आपने उसको जो है पढ़ा दिया, आपने उसको लिखना सिखा दिया, आपने उसको पढ़ना सिखा दिया, आपने उसको मैथ्स करना सिखा दिया, तो हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट हिम? उससे उसको क्या फायदा मिलने वाला है? दिस इज व्हाट गांधी जी इज आस्किंग. इज इट गोइंग टू मेक हिम मोर हैप्पी? वो अगर आप उसको प्राइमरी एजुकेशन दे देते हो तो क्या वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगा, और ही विल फील डिससैटिस्फाइड विद हिज लाइफ? गांधी जी को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा डिसकंटेंटेड हो जाएगा. डिसकंटेंटेड मतलब डिससैटिस्फाइड हो जाएगा अपनी लाइफ में अगर आपने उसको प्राइमरी एजुकेशन दे दी. क्यों? Because then he will start thinking, now since I have known how to study, maybe I can study more and do something and leave my job. वो जो भी काम कर रहा है और उसको क्या लगने लगेगा, अचानक से अपना घर छोटा लगने लगेगा. This is what गांधी जी is saying. Carried away by the flood of Western thought, we came to the conclusion, without weighing pros and cons, that we should give this kind of education to the people. Now let us take higher education. I have learned geography, astronomy, algebra, geometry, etc. What of that? In what way have I benefited myself or those around me? Why have I learned these things? Professor? Okay, I will come to his definition. Now he's saying, okay, this was the primary education. What about the higher education? गांधी जी is telling about himself कि जब उन्होंने higher education ली थी तो उन्होंने क्या क्या पढ़ा था? उन्होंने geography पढ़ी थी, astronomy पढ़ी थी, algebra पढ़ा था, geometry पढ़ी थी.
So now he's questioning how the study of these disciplines has benefited me or someone else. कैसे ये सब पढ़ने से उनकी लाइफ में कोई चेंज आया या फिर जो है और भी लोग जो ये सब पढ़ते हैं उनके लाइफ में कोई चेंज आया. So now he goes on to tell us how Professor Huxley has defined education. He has defined education as that man, I think, has had a liberal education who has been so trained in youth that his body is the ready servant of his will and does with ease and pleasure all the work that as a mechanism it is capable of, whose intellect is a clear, cold logic engine with all its parts of equal strength and in smooth working order, whose mind is stored with a knowledge of the fundamental truths of nature, whose passions are trained to come to heel by a vigorous will, the servant of a tender conscience, who has learned to hate all vileness and to respect others as himself. Such a one and no other, I conceive, has had a liberal education, for he is in harmony with nature. He will make the best of her and she of him. So now what is he saying? He has given us a very long definition of education, which was originally given by Professor Huxley. So what, according to Professor Huxley, is education? Education is training your mind to work according where sorry education, according to Professor Huxley, is training your mind to keep in check your passions, your emotions, so that whatever action you undertake is logical, is rational, and also where you have a very tender conscience. Tender conscience मतलब conscience क्या होती है? The little voice in our head which keeps on telling us what is right and what is wrong. अगर आप अपनी conscience पे ध्यान देते हो और अपनी conscience की बात मानते हो and you do not indulge in any kind of vileness, in any kind of if you do not harm anyone knowingly, then you are, and also you are in harmony with nature. You can understand the importance of nature in life and you try to maintain a synergy with nature, then you are educated. ठीक है, क्या क्या बातें कही है गांधी प्रोफेसर हक्सले ने कि आपको अगर अपने पैशंस, अपने इमोशंस जो है उनको कंट्रोल में रखना आता है और जो है जो भी काम आप करते हो बहुत सोच समझ के करते हो, then you respect nature and you try to learn from nature. जो भी आपने बहुत सोच समझ के डिसीजंस लिए हैं, you have the courage, you have the strength to undertake those decisions, actions. ये आपने जो भी सोचा है, सोच समझ के कोई अगर डिसीजन लिया है जो आपको ठीक लगता है, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप वो कर भी सको. ठीक है. देन यू रिस्पेक्ट अदर पीपल. आप किसी के साथ जान के बुरा नहीं करते हो, जैसे कि आप अपने आप जैसा चाहते हो कि दूसरे आपको ट्रीट करें वैसे ही आप दूसरों को ट्रीट करते हो, तब आप क्या हो? देन यू आर एजुकेटेड. और अगर आप इस डेफिनेशन में उस पेजेंट को रख के देखो, जिसकी गांधी जी ने पहले से सबसे पहले बात करी थी कि जो है he is a good father, he is a good brother, he is a good child, है ना. He respects everyone around him. वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है and he takes care of his family. अपनी जितनी भी उसकी ड्यूटीज हैं वो बहुत अच्छे से करता है. So don't you feel that he is educated already? उसको किसी और एजुकेशन की जरूरत है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए? If this is true education, I must emphatically say that the sciences I have enumerated above I must emphatically say that the sciences I have enumerated above, I have never been able to use for controlling my senses.
Therefore, whether you take elementary education or higher education, it is not required for the main thing. It does not make men of us. It does not enable us to do our duty. ठीक है, तो गांधी जी को क्या लगता है कि जो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, ज्योमेट्री पढ़ी, उससे उनको कहीं ये सीखने को नहीं मिला कि जो है कैसे आप अपने पैशंस को कंट्रोल करो, कैसे आप अपनी ड्यूटीज में और ड्यूटीज को अच्छे से करो। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट ट्रू एजुकेशन। जब आपने सिविलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें गांधी जी ने क्या कहा था? टू बी सिविलाइज्ड इज टू फॉलो योर ड्यूटीज। उनके लिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या था? कि आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। ड्यूटीज एज एन इंडिविजुअल, ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ नेशन। अगर आप ये ड्यूटीज जो है अपनी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, देन यू आर सिविलाइज पर्सन। बट अगर कोई एजुकेशन सिस्टम है जो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है और बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा है, then that is not beneficial for us. ऐसे एजुकेशन सिस्टम से हमें कोई भी फायदा नहीं है। If that is so, now reader is again asking a question from Gandhi ji. If that is so, I shall have to ask you another question. What enables you to tell all these things to me? If you had not received higher education, how would you have been able to explain to me the things that you have? So now the reader puts on a very pertinent question. He says that Gandhiji has this capacity to think and express himself very clearly. Now this clarity in thought and expression, it comes from education. ना, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके अंदर जो है क्या होता है कि आपके अंदर ऐसी शक्ति होती है, डेवलप हो जाती है, जिससे कि आप सोच सको और जो भी आपने सोचा है उसको किसी और को आसानी से क्लियर शब्दों में एक्सप्रेस कर सको। सो द रीडर इज आस्किंग कि अगर गांधी जी को एजुकेशन नहीं, वॉट एवर ही इज सेइंग, he would not have been able to say it if he had not been educated. So what Gandhiji is saying now? You have spoken well, but my answer is simple. I do not for one moment believe that my life would have been wasted had I not received higher or lower education. Nor do I consider that I necessarily serve because I speak. But I do desire to serve, and in endeavoring to fulfill that desire, I make use of the education I have received. And if I am making good use of it, even then it is not for the millions, but I can use it only for such as you, and this supports my contention. Both you and I have come under the bane of what is mainly false education. I claim to have become free from its ill effects, and I am trying to give you the benefit of my experience, and in doing so, I am demonstrating the rottenness of this education. Gandhiji is saying, he's making a very emphatic, he's saying very emphatically that he does not believe for a moment that the education that was given to him was of any use. भले ही जो रीडर है वो ऐसा कह रहा है कि वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, और गांधी जी का क्या कहना है कि वो एक मोमेंट के लिए भी ये बिलीव नहीं कर सकते कि अगर उनको ये एजुकेशन नहीं मिली होती तो वो अपने आप को जो वो आज कर रहे हैं वैसा वो नहीं कर रहे होते। And he's saying he is able to speak out his mind because he has become free from its ill effect. जो उन्होंने पढ़ा उसका इफेक्ट उन्होंने अपने माइंड से खत्म किया, तब जाके जो है उनके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि वो ये सब बोल रहे हैं, तब उनके अंदर इतनी नॉलेज आई है कि वो ये सब बोल रहे हैं। And because he understands how false this education is, he is trying to warn other people through this book. जो उनको जो है ये बात अब समझ में आ गई कि जो है एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं है। आफ्टर ही वेंट थ्रू एवरीथिंग,
So now he wants to communicate this to other people also, that this education system is of no use to anyone. Moreover, I have not run down a knowledge of letters in all circumstances. All I have now shown is that we must not make of it a fetish. It is not our kamaduk. Kamaduk is what is Kamaduk? Kamaduk is a mythical cow yielding whatever is wished for. In its place, it can be of use and it has its place when we have brought our senses under subjection and put our ethics on a firm foundation. And then, if we feel inclined to receive that education, we may make good use of it. As an ornament, it is likely to sit well on us. It now follows that it is not necessary to make this education compulsory. Our ancient school system is enough. Character building has the first place in it, and that is primary education. A building erected on that foundation will last. So he's saying that I'm not saying that all education is bad, but or it, um, but we should not we should not start looking at education as a panacea for all प्रॉब्लम्स, जिसको कि गांधी जी ने क्या नाम दिया, कामाधुक, मिथिकल काउ. आपको एजुकेशन, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा मैंने पढ़ाई कर ली तो आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ, आई हैव बिकम ऑल नॉलेजेबल. हर समस्या का समाधान एजुकेशन नहीं है ना. इसकी जगह अगर आप जो है क्या प्रैक्टिस करते हो कि आप अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल के अंदर रखो एंड you build yourself to be morally strong, then that is more important than being educated. He is comparing education with an ornament. एक ornament जैसे कि for example there is a necklace. एक नेकलेस से जो है आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन को कंपेयर कर सकते हो. कैसे कि जब आपने नेकलेस पहन लिया तो आप बहुत इट इम्प्रूव्स योर लुक. लोग देख के कहते हैं कि अच्छा गोल्ड नेकलेस पहना है ना. तो जो है लोग यू हैव इट एड्स वैल्यू टू योर अपीयरेंस. आप कैसे दिख रहे हो उसमें वो वैल्यू एडिशन कर रहा है. ठीक है. But it is not contributing in any form to your knowledge, the real knowledge. The real education जिसको गांधी जी ने क्या कहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग. वो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में जो है कोई हेल्प नहीं कर रहा है, but it is bringing you into focus. So that is the current education, that is the education that is being followed now. So he thinks that there is no need to make education compulsory. जो हमारा ancient school system था जिसमें कि character building पे ज़्यादा focus किया जाता था, that is the best form of education for Indians. Do I then understand that you do not consider English education necessary for obtaining home rule? ठीक है. Then reader asks another question that गांधी जी से क्या कह रहे हैं कि इट सीम्स दैट यू डोंट कंसिडर इंग्लिश एजुकेशन टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग होम रूल. अगर होम रूल चाहिए तो गांधी जी को ऐसा नहीं लगता कि जो है इंग्लिश एजुकेशन की जरूरत है हमें. व्हाट इज एडिटर सेइंग? माय आंसर इज यस एंड नो. टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू एनस्लेव देम. The foundation that Macaulay laid of education has enslaved us. I do not suggest that he had any such intention, but that has been the result. Is it not a sad commentary that we should have to speak of home rule in a foreign tongue? And it is worthy of note that the systems which the Europeans have discarded are the systems in vogue among us. Okay, so what he thinks. Okay, let me tell you a bit about the education system that he is talking about. He is talking about the education system that was brought up
दैट वाज ब्रॉट बाय मैकॉलेज मिनट। आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने मैकॉलेज मिनट्स पढ़े होंगे। मैकॉले ने जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है इंडिया में एजुकेशन का ही हैड फ्रेम्ड इट, जैसे अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी तरीके से मैकॉले ने एक सिस्टम बनाया था, एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडिया, एंड इन दैट he had made English compulsory for all Indians। जितने भी स्कूल्स थे उसमें इंग्लिश पढ़ाना कंपल्सरी कर दिया था। एंड he said that in the document it was written that all education should be imparted through English medium, कि जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी वो किस मीडियम से दी जाएगी, नॉट थ्रू द मदर टंग या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ना देके इंग्लिश में दी जाए। सो ही हैड मेड इंग्लिश कंपल्सरी इन स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया, और यही सिस्टम जो है जब गांधी जी ने ये बुक लिखी ये फॉलो होता था। Now, what was the idea behind the system? The idea behind the system was that the Britishers, they required people in India to work in their offices, है ना। अगर उनको offices run करने हैं तो they cannot bring so many British people to work in the office। उनको क्या करना पड़ेगा, local लोगों को hire करना पड़ेगा, Indians को hire करना पड़ेगा, but Indians cannot be of any use until and unless they speak and understand and write English, है ना। अगर आप जो है उनसे इंग्लिश ऑफिसेज में काम कराना चाहते हो तो उनको इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए कि वो लिख भी लें, वो पढ़ भी लें, वो समझ भी लें, है ना। तो फॉर दैट पर्पस मैकॉलेज मिनट्स में क्या था कि जो है सबको इंग्लिश पढ़ाओ ताकि हमें ऑफिसेज में काम करने के लिए लोग मिलें। सो दे डिड नॉट वांट टू बिल्ड अ नॉलेज बेस, एंड दिस वाज वेरी रूडिमेंट्री सिस्टम। बाकी भी जो जितने डिसिप्लिन्स लगाए जैसे मैथ्स है तो ये सब एवरीथिंग वाज वेरी बेसिक जस्ट टू ट्रेन दी इंडियंस सो दैट दे कैन वर्क इन देयर ऑफिसेस। गांधी जी वाज राइटिंग अगेंस्ट दिस सिस्टम। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी क्या चाहते थे कि बच्चों को जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है या जो उनकी मदर टंग है उसमें पढ़ाया जाए, एंड दैट मेक सेंस ऑल्सो, है ना। कि क्यों हम जो है बचपन से इंग्लिश पढ़ें, पहले हम जो हमारा बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है वो कौन सी लैंग्वेज से होनी चाहिए, हमारी अपने मदर टंग से होनी चाहिए, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट गांधी जी इज क्रिटिसाइजिंग हियर, and it is worthy of note that the systems which the Europeans have discarded are the systems in vogue among us. The learned men continually make changes. We ignorantly adhere to their caste of systems. They are trying each division to improve its own status. Wales is a small portion of England. Great efforts are being made to revive a knowledge of Welsh among Welshmen. The English Chancellor, Mr. Lloyd George, is taking a leading part in the movement to make Welsh children speak Welsh. And what is our condition? We write to each other in faulty English, and from this even our MAs are not free. Our best thoughts are expressed in English. The proceedings of our Congress are conducted in English. Our best newspapers are printed in English. If this state of things continues for a long time, posterity will, it is my firm opinion, condemn and curse us. Okay, so he is saying we Indians, when we stick to an idea, it is very difficult to then erase it from our minds. इंडियंस में क्या है प्रॉब्लम है कि एक आइडिया अगर आपके दिमाग में चला जाता है तो फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी भी लीडिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे आइडियाज जो है टाइम के साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना। तो ही इज गिविंग अस एन एग्जांपल कि इंग्लैंड में जो है वेल्श लोगों में जो है दिस इज अ न्यू अवेकनिंग, दिस इज अ न्यू मूवमेंट वेयर दे आर टीचिंग देयर चिल्ड्रन टू स्पीक इन वेल्श इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, है ना। और अब वहाँ पे देखोगे अभी भी ये सिस्टम है यूरोप में कि इंग्लिश इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड लैंग्वेज। वहाँ पे जो लैंग्वेज ऑफ सिविलाइज्ड है इट इज़ फ्रेंच। जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस दैट वी
are not able to think beyond English, कि हम English पे stick हो गए हैं, तो हम आज तक जो है English पे ही we are stuck. So he's saying this is not going in the right direction. Our country is not going in the right direction because our newspapers are now in English. जो कांग्रेस की proceedings होती हैं वो English में है. Everything is in English. And later on, when perhaps the English rule is gone, then we will realize that we have lost our languages. हमें जो है क्या होगा, बाद में रियलाइज होगा कि कैसे हमने अपनी लैंग्वेजेस को अपने आप खत्म कर दिया. It is worth noting that by receiving English education, we have enslaved the nation. Okay, actually, this is a very long chapter, so I will. Achha, we have almost reached to the end. Let me skip one page and just summarize it. And what Gandhiji has pointed out here in the next paragraph, it is true till today. सुप्रीम कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज इंग्लिश, है ना. वहाँ पे जितने भी कोर्ट केसेस लड़े जाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लड़े जाते हैं, इंग्लिश में. सो he thinks that it is a sign of slavery. We somewhere in our psychology have this embedded that English is superior than Hindi, है ना. English is superior than any regional language of India. और इस वजह से ये जो हमारी साइकोलॉजी है इसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि we are becoming slaves to English culture. I'm leaving one page, ये आप लोग खुद पढ़ोगे. It is not difficult, you'll get the idea what he's saying. I am skipping to the last page so that we can finish it today. Then what education shall we give? So now leader asks, since he is condemning English education, since he is so much against the education system that is being followed in the present time. So reader is asking, okay, then what kind of education should be given to the children? हमें कैसे जो है education देनी चाहिए? This has been somewhat considered above, but we will consider a little more. I think that we have to improve all our languages. What subjects we should learn through them need to be elaborated here. Those English books which are valuable, we should translate into the various Indian languages. We should abandon the pretension of learning many sciences. Religious, that is, ethical education will occupy the first place. So he is giving some of the ideas that he thinks are more suited for education system in India. सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा कि we should improve all our languages. हमारा India is a nation where multiple languages are spoken. You know, every region of India has a different language. So what we should do? We should improve all our languages and books which are written in English. जो कि साइंस की बुक्स हैं, इंग्लिश की हैं, जो कि बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमें उनको क्या करना चाहिए? वी शुड गेट देम ट्रांसलेटेड इनटू लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस, ताकि सब हर कोई जो है इंडिया में बुक्स पढ़ सके. एंड देन ही इज सेइंग दैट एथिकल एजुकेशन विल ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस. ये गांधी जी ने पहले भी कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इट शुड फोकस अपॉन कैरेक्टर बिल्डिंग. इसीलिए जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, किस पे फोकस होनी चाहिए? अपॉन एथिक्स, अपॉन मोरालिटी, moral behavior. Every cultured Indian will know in addition to his own provincial language, if a Hindu Sanskrit, if a Mohammedan Arabic, if a Parsi Persian, and all Hindi. ठीक है. So what is he saying कि if you are a Hindu, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके अलावा अगर आप हिंदू हो तो आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको अरबिक पढ़नी चाहिए, अगर आप फारसी हो तो आपको पर्शियन पढ़नी चाहिए, और सबको क्या पढ़ना चाहिए? हिंदी. बिकॉज देयर शुड बी अ कॉमन लिंक बिटवीन ऑल पीपल. तो वो कॉमन लिंक जो है वो कौन सी लैंग्वेज सर्व करेगी? हिंदी. Some Hindus should know Arabic and Persian, some Mohammedans and Parsis.
संस्कृत. सो ही इज नॉट सेइंग दैट दिस इज कि अगर आप हिंदू हो तो आप जो है संस्कृत ही पढ़ोगे, लेकिन अगर आप जो है अरबिक पढ़ना चाहते हो तो आप अरबिक भी पढ़ सकते हो. All he is trying to emphasize is that we should know multiple languages. Since we belong to a nation which has so many languages, it is pertinent for us, it is important for us to know the various languages that are spoken in our nation. है ना, आप ऐसे नेशन को बिलोंग करते हो जहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो कम से कम 2-3 लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए. तो आप अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग आप कोई भी लैंग्वेज और पढ़ सकते हो. Several northerners and westerners should learn Tamil. A universal language for India should be Hindi, with the option of writing it in Persian or Nagri characters. In order that the Hindus and Mohammedans may have closer relations, it is necessary to know both the characters. And if we can do this, we can drive the English language out of the field in a short time. All this is necessary for us slaves. Through our slavery, the nation has been enslaved, and it will be free with our freedom. So he is saying that we have become slaves. We have become slaves because we are speaking the language of the ऑप्रेसर. हम जो है अपने ऑप्रेसर की लैंग्वेज बोल रहे हैं. इसका मतलब क्या है, हम स्लेव हो चुके हैं, वी आर बीइंग एनस्लेव्ड. और इस स्लेवरी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर लोकल लैंग्वेजेस, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर रीजनल लैंग्वेजेस. जब हमारी रीजनल लैंग्वेज स्ट्रेंथन हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंग्लिश के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एंड देन वी विल नॉट बी स्लेव्स एनी मोर. The question of religious education is very difficult. अब गांधी जी ने एक टर्म यूज किया था कि रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, और जहाँ पे रिलीजन की बात आ जाती है वहीं पे क्या होता है, इट इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया. सो रीडर क्या पूछ रहा है कि जो है, हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव रिलीजियस एजुकेशन. Editor, yet we cannot do without it. India will never be godless. Rank atheism cannot flourish in this land. The task is indeed difficult. My head begins to turn as I think of religious education. Our religious teachers are hypocritical and selfish. They will have to be approached. The mullahs, the dasturs, and the brahmins hold a key in their hands. But if they will not have the good sense, the energy that we have derived from English education will have to be devoted to religious education. This is not very difficult. Only the fringe of the ocean has been polluted, and it is those who are within the fringe who alone need cleansing. We who come under this category can even cleanse ourselves, because my remarks do not apply to the millions. In order to restore India to its pristine condition, we have to return to it. In our own civilization, there will naturally be progress, retrogression, reforms, and reactions. But one effort is required, and that is to drive out Western civilization. All else will follow. So Gandhiji is also admitting that giving religious education is very difficult, क्योंकि जो religious education जिनके थ्रू दी जाती है, मुल्लास, दस्तूर्स, ब्राह्मण्स, उनके भी अपने क्या हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके सेल्फिश मोटिव्स होते हैं, और वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. सो ही इज सेइंग कि वी विल हैव टू अप्रोच देम, वी विल हैव टू टॉक गुड सेंस इनटू देम. उनको हमें समझाना होगा कि क्यों ये वो अच्छे से जो है रिलीजियस एजुकेशन लोगों को दें, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एज अ nation. What is he saying? Only the fringe of the ocean has been polluted. ये जो मुल्लास हैं, दस्तूर्स हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, जो कि रिलीजन को जो है उन्होंने वो करके रखा है, कैप्टिव बना के रखा है, वो ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े से ही वो पावरफुल हैं, बट क्या है, वो कम है. तो वो क्या कह रहे हैं, जो ओशन है नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज का जो ओशन है, उसके जो बॉर्डर्स हैं बस वो वहीं वहीं हैं. बस इतनी से जो है हमें मेहनत करनी है कि हम उनको वहाँ से हटा सकें, बाहर कर दें बिल्कुल.
तब जो है जाके किसी हमें अच्छी रिलीजियस एजुकेशन मिल सकती है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू गांधी जी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन इंडिया पीपल बिलीव इन गॉड. हमारा कल्चर जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वी बिकम एथीस्ट, कि हम गॉड में विश्वास करना बंद कर दें. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव गुड रिलीजियस एजुकेशन विच इज़ नॉट, विच इज़ प्योर. कैसी रिलीजियस एजुकेशन चाहिए हमें? जो कि प्योर हो, विच इज़ गुड इन इंटेंट एंड विच इज़ गुड इन, विच हैज़ गुड सेंस. In order to restore India to its pristine condition, we have to return to it. In our civilization, there will naturally be progress. Now, this is a process. है ना. जब आप प्रोग्रेस करते हो फिर उसका रिएक्शन होता है, तो आप रेट्रोग्रेशन करते हो, मतलब वापस आते हो, फिर रिफॉर्म्स होते हैं, फिर रिफॉर्म्स फिर रिएक्शंस होते हैं. सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल. एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस. हम रिलीजियस एजुकेशन लाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग रेजिस्ट करेंगे, फिर हम उसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, फिर उसमें रिएक्शन होंगे. बट दिस इज समथिंग विच इज वर्थ ट्राइंग. वी शुड try this in order to restore our civilization to its pristine condition, to its pure condition. So these were the views of Gandhi ji regarding education. I hope you understood his views. Yes, ma'am. Okay.